Yes, ma'am. Yes, thank you. Thank you. How many of you were present in the part one session of cupping and taping last Saturday? If someone was among from you, please type yes. I was there. Because this is the second part of pain management. We are unlocking the pain management through cupping and taping. Okay, so very few of you were present, I think. Okay, those who were not present last time, the recording of the first lecture was been provided in the WhatsApp group. If you have missed by any chance, we'll be providing the recording of last lectures again. And today, let us welcome Dr. Swapnil Gawande, sir. Okay, sir has joined. Doc, Dr. Swapnil Gawande, sir, he doesn't need any special introduction as most of us know him very well. He is an Ayurved consultant for pain and spine disorders, and also for sports injury management. He owns his own hospital, Ayurprabha Multispeciality Hospital, which is dedicated only for spine care and joint care and for sports injury. It is located in Akola. He has a very vast experience of 15 years in orthopedic and spinal disorder management through Ayurveda. And the main important, the star mark in his practice is he is using modern technology. So he is integrating all the modern technologies which he has learned from national and international conferences. And he blends it very beautifully with Ayurveda and his experiences, the cream which he gets from all these things by managing all the patients, he brings in front of us through different free webinars and to different conferences, to different um, courses. Okay, so he specializes in integrated Ayurved management in sports injury with a focus on athletes' performance as an honorary sports medical officer at Chhatrapati Kridapit Pune Krida Prabodhini Akola. He has treated many national and international level players. So we have very few Ayurveda consultants who treat national and international players, the sports persons, and among those is Dr. Swapnil Avinash Gawande sir, who is with us today. And through many years, he's been giving many free webinars on spine and joint care. So I welcome every one of you that you are very much lucky today to get few aspects, the few new aspects of cupping and taping, which we have never learned or heard before. His key expertises are cold orthopedic cases, which he manages through Ayurveda and manual therapies. Also, structural integration of spine through Ayurveda and manual therapies. So, in his practice, where he practices in Akula, he integrates Ayurveda, he integrates Panchakarma, osteopathy, and chiropractic with modern robotics and AI for orthoneuro abnormalities. He has done completed, if we go through the educational background, he has completed his BMS from in 2008. He has also done his MSc in sports science from Pune. Apart from that, there are many diplomas or certificate courses which he has done from national and internationally. So, Oh, diplomat in osteopathic manual therapy from Osaka, Japan, he has recently completed, and diploma in chiropractic science from Osaka, Japan, again, and fellowship in sports rehabilitation, Apollo Hospitals from Hyderabad. Then, if I read out his international certificate, it's a very big list of more than, I think, 20 certifications he has done from various countries, from USA, from UK, from Chennai, from Australia.
So there are many. I'll be posting his achievements in the WhatsApp group also, his international certifications also. But today, without wasting much of the time, I welcome all of you and I welcome Dr. Swapnil Gawande sir to start and his lecture and throw some light on pain management, which can be dealt through cupping and taping. And obviously, this is part 2 session. You will be getting the recording of part 1 also. So we are continuing the session now. Thank you, ma'am. सर Thank you हिंदी में ही for बात the करेंगे. introduction. We'll be continuing in Yes. English and Hindi both. Okay. तो Thank you. हम दोनों मैम चीजों में हिंदी सर प्लीज हिंदी का यूज ज्यादा कीजिए प्लीज. मैडम ज्यादा और कम का तो नहीं, मैं बैलेंस करने की कोशिश जरूर करूंगा. So because there are some people who have the issue in understanding the Hindi, but I will try to integrate both the languages like Hindi and English. So first of all, I would like to know from you all the two questions. The first one is that am I audible? Yes sir. You can unmute and answer, but in very short. And the second question is that please type why, only why in chat box, that how many of you have attended the last lecture, because this is the continuation of the last lecture. So some may have feel left out, but I would अपील टू यू कि आप ऐसा मत ये कीजिए, इस लेक्चर को पूरा सुनिए. ग्रुप में हम सारे जिस ग्रुप के थ्रू आप ज्वाइन हुए हैं उस ग्रुप में पिछले इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा. सो यू विल गेट अ ओवरऑल ओवरव्यू कि हम एक कपिंग और टेपिंग के थ्रू कैसे हमारे एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में एक नया एज, एक नई मोडेलिटी ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस को और ज़्यादा निखारेगी और औरों से आपकी प्रैक्टिस को अलग बनाएगी और आपके पाले में, आपके बकेट में एक और टूल होगा पेशेंट से डील करने के लिए. सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाउ द कपिंग एंड टेपिंग कैन हेल्प इन द acute cases and how it can be utilized during our routine practice. And to be very short, क्योंकि गणपति का सीजन चल रहा है, सारे लोग बिजी है. सो इस पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेपिंग. इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो पिछले वीडियो में हम टाइम की कमी की वजह से नहीं पूरे कर पाए थे. तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट ऑफ लेक्चर. उसके बाद में हम एक 10 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Okay, so most of the people have not attended the last lecture, so you will definitely get the link for the last lecture. So not taking much of your time, we will directly move on to the today's topic. Okay, I got the thing. Please stop messaging. I would request you, please don't unmute yourself unless and otherwise it is very essential. So, as I have said that we will start from the types of cupping and
taping in this lecture. So there are lots of types of cupping which can be done, like the bamboo cupping, the shrungi. Then there are some uh, cups with the nozzles, or different material cups like silicone cups, bamboo cups, wooden cups, earthen cups. जैसे मिट्टी के कप, बाम्बू के कप, प्लास्टिक के कप, और बहुत सारे टाइप के कपिंग होते हैं। लेकिन इनका जो मूल उद्देश्य होता है वो मायोफेशियल रिलीज होता है, पेन का सर्कुलेशन बढ़ाना होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। सो इन दिस लेक्चर वी आर फोकसिंग ऑन द टाइप्स ऑफ कपिंग। तो जो सबको मोस्ट कॉमनली कपिंग जो हम सारे लोग देखते हैं, या आप सबने देखा होगा, आप में से कुछ लोग इसे प्रैक्टिस भी करते होंगे, वो है वेट कपिंग और ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग में जिसमें हम कोई भी ब्लड लेटिंग इस्तेमाल नहीं करते, केवल और केवल कप से ही हम कपिंग करते हैं और जिससे मायोफेशियल रिलीज होता है। सेकंड, वेट कपिंग में हम जिसपे ब्लेड या निडल से माइक्रो इंजुरीज करते हैं, माइक्रो ट्रॉमास करते हैं, और फिर कप से वहां से ब्लड सक करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज वेट कपिंग। देन अनदर टाइप ऑफ कपिंग आर लाइक दैट फायर कपिंग, जिसमें इसको चाइनीज मेथड में भी कहा जाता है, या आयुर्वेद में घटी यंत्र के वक्त भी इसे यूज किया जाता था। इसमें आग के द्वारा कप में वैक्यूम बना के उसको अटैच किया जाता था, जिससे कि एक गर्म वार्मथ भी उस स्किन को मिले और कपिंग का जो सक्शन इफेक्ट है वो भी मिले। ग्लाइडिंग कपिंग, दिस इज वेरी कॉमनली हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे पंचकर्म के साथ। व्हाट एक्चुअली हैपन्स कि हम एक या दो पंप के साथ ये करते हैं, जो स्नेहन स्वेदन का मसल का ओरिजिन टू इंसर्शन जो भी कोर्स है, वहां पे इस कप को स्किन को पुल करके ये करते हैं, जिससे कि डीप टिश्यू मसाज होता है, सो दैट द फेशिया कैन बी रिलीज वेरी एफिशिएंटली, एंड you can add such kind of things in the blunt trauma, chronic trauma, in myofascial tightening, in muscle tightening, or in the stiffness easily. So these are the major 4 kinds of cupping we practice. Other than that, there are cupping with needling, or dynamic cupping is the type, and all other types are there, but they are more or less the extended version of these major 4 type of cupping. So some people have requested in last video to show some practical videos. So somebody unmute and let me know that am I audible and screen is visible? Yes, sir, you're Yes, sir. audible and screen is visible, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So in this we are going to demonstrate, or you can see the weight cupping actual procedure. The patient is of infraspinatus muscle spasm, and I am performing the weight cupping. So you can see that I am using here the surgical blade. Never use topaz blade or the shaving blade for it. It looks very unprofessional. We are the doctors and we should behave like a doctor. So we should conduct like a doctor with this. So use proper sanitization before applying this blade. To save the time, I have cut that part from this video. I have thoroughly cleaned the skin with the spirit, and you have to wait till the skin get dry, because if you will directly start cutting when the spirit is on the skin, it will very much painful for the patient. It will have a troublesome for the patient. So let's see the procedure. You can see that I am using proper gloves, I am using the proper hygiene, I am maintaining the proper hygiene, and the cuts should be so superficial that you can see that you are not able to see any drop of blood.
Any drop of blood you can't see while I have given so many cuts. And when I will apply the cup, suddenly you will see that the blood is coming out of that. Because remember, the deep, more deeper cuts will remain the scar. They will leave behind the scar. बहुत बड़े बड़े स्कार रह जाएंगे, और अगर आप किसी नाजुक जगह पे या किसी कॉस्मेटिक जगह पे आप वो करोगे तो इट विल लुक वेरी बैड. तो आप देख सकते हैं कि जो स्कार्स इनविजिबल दिख रहे थे, कुछ ही मिनट में वहां पे एक गुड अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्ट हो गया है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डीप कट दोगे तो ही बहुत ज्यादा ब्लड आएगा. अगर वहां पे दोष दृष्टि है, वहां पे अगर संचिति है, रक्त दृष्टि है, तो बहुत जल्दी वहां पे आप देख सकते हैं कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ब्लड हैज बीन कलेक्टेड. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेट कपिंग. तो वेट कपिंग क्यों करना है? तो अब जैसे आप देख सकते हो इस पेशेंट में कि ये मैं बैक पे कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे सिरावेद करने के लिए कोई ये नहीं मिलेगी, वेन या नर्व नहीं मिलेगी, सॉरी कोई वेन नहीं मिलेगी. सो अगर मुझे यहाँ से रक्तमोक्षण करना है तो वेट कपिंग सबसे आसान, सबसे सेफ और सबसे जल्दी होने वाला ये है. हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? देखिए, बहुत बार जगलर वेन में वेट कपिंग करना चाहते हैं लोग, मगर वहाँ पे डर लगता है, वेन पंक्चर होने का डर लगता है, पेशेंट रेडी नहीं होता है. तो दिस इज मोर सेफर वे. टेनिस एल्बो में आप यूज कर सकते हो. टेनिस एल्बो में आप ये यूज कर सकते हो. इसके बाद में आप रेट्रोकैल्किनियल पेन में भी इसको यूज कर सकते हो. इसके बाद में नेक्स्ट टाइप है डायनेमिक कपिंग. ड्राई कपिंग सभी को पता है, टू अटैच द कप. आप यहाँ देख सकते हो इस वीडियो में, मैंने ये एथलीट है जिसको हैमस्ट्रिंग पुल है. तो इस हैमस्ट्रिंग पुल की वजह से मैंने उसके चारों हैमस्ट्रिंग मसल्स पे कप से कवर कर लिया है. एंड देन आई एम गोइंग टू मूव हिज लेग. सो पहले मैंने कप फिक्स किए और फिर मैं उसे मूवमेंट दे रहा हूं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक कपिंग. हम पेशेंट को चला भी सकते हैं. सो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डायनेमिक कपिंग? टाइट मसल को लूज करता है. अधेजन्स अगर मसल्स में बने हैं तो उसको ब्रेक करेगा. एक्सेलरेट्स डैमेज टिश्यू रिपेयर. लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ेगा, लिम्फेटिक फ्लो बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से जो डैमेज टिश्यूज है वो जल्दी रिपेयर होंगे. reduces inflammation, assist in draining the lymphatic system. So these are the potential benefit of dynamic cupping, जिससे कि आपका पेन हीलिंग, मसल हीलिंग या क्रॉनिक ओवर यूज इंजुरी जो होती है या क्रॉनिक इंजुरी जो होती है उसकी हीलिंग में ये हेल्प करेगा. इसको आप स्नेहन स्वेदन के तुरंत बाद कर सकते हो, स्नेहन स्वेदन के दौरान कर सकते हो. इट विल गिव मोर इम्पैक्ट. दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर शोल्डर. फ्रोजन शोल्डर और शोल्डर इंजुरीज में हम इसे यूज कर सकते हैं. दिस आर प्रॉपर cups are attached. These are attached according to the anatomical positions, not randomly attached. And I'm asking the patient to move the leg. फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि मैं पैसिवली पेशेंट का लेग मूव कर रहा हूं. यहाँ पर पेशेंट खुद अपना शोल्डर मूव कर रहा है. This is the dynamic cupping for low back pain. सेम प्रोसीजर लो बैक पेन में हमने कप्स अटैच किए. and now giving the movement to the patient. पेशेंट को आप स्पॉन्टेनियसली भी बोल सकते हो. इससे बहुत अच्छे से आपका मसल रिलीज होगा और पेशेंट विल फील इमीडिएट पेन रिलीफ.
Now coming to the fire cupping. ये फायर कपिंग का डेमो है. You can see that कि I am painting the cup inside with spirit and the help of cotton gauze. You have to be very careful that the spirit should not be, and the spirit and the flame should not touch the edges of the cup. So this is the method. In the next video, we will see that how it works. So now you can see that the cup has attached, the vacuum has been generated. Here both cupping and the and shushka seed is given so that in acute cases in inflammatory conditions, this helps very good. You can see that how firmly the cup has been attached. Then, as I have told in the earlier, that the gliding cupping in this is the form of gliding cupping. Is the audio of the video is audible? No, sir. No sound in the audio video. Okay, I will give you the voice over. So gently I have applied the oil. Then I am fixing or applying the cups. And after this cup, you can see that I have just pumps once or twice, and then you can see the gliding, how I am gliding. So this gliding helps in the tissue release, myofascial release, and also it can help in lymphatic drainage, which helps in reducing the edema. So this was all about the different types of cupping and their application. So in the next topic, that is okay. So we will first finish up our next topic, that is different types of taping. Somebody's mic is on.
Sorry, because of some mess. So I am going to show you some kinds of taping, so that you will get the overall idea. Okay, so IT band or iliotibial band is one of the major reason of pain in knee, especially into the runners or overuse injury, or in uh, females also because of the pelvic dysfunctions. So this is how you can see this tape is called as the kinesiology tape. uh, it has been attached with different color so that you can identify it very clearly. So it has been attached in the course of IT band, that is iliotibial band, iliotibial band, which is going to give support to the knee. Also, you can attach this kind of band into the amateur athletes, like who are the seasonal marathon runners or the seasonal bicycles. In those, you can use this kind of tips. So I will show you some simple technique. So this is how, actually this is a real, we, this is not a real patient. The patient is with, actually he is a model for your understanding. So but before applying tape, uh, ideally it should, the skin should be shaved, because if you will apply the tape on the hairy skin, then it will not have that impact. So I am just showing that how that tape was attached. So from the lateral aspect of the knee, that is from insertion towards origin, it was fixed, so that the muscle which is stretched, जो मसल खींची गई थी वो रिलैक्स हो सके. Then the second and the third, इसे कहते हैं आई स्ट्रिप या स्ट्रेट स्ट्रिप. So in this manner it was fixed. It is a kinesiology tape. Generally kinesiology tape जो होता है वो उसके टोटल लेंथ के डबल स्ट्रेच होता है, यानी दुगना ये होता है. जितनी क्रॉनिक इंजुरी होगी उतना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हो, जितनी एक्यूट इंजुरी होगी उतना कम स्ट्रेच हमें करना है. कमिंग टू द नेक्स्ट, ये एंकल स्प्रेन में या शिन स्प्लिंट में लगाए जाने वाला कप का ये होता है, टेप का डायरेक्शन होता है. ये भी एंकल स्प्रेन में दिस इज अ रिजिड टेपिंग. जैसा ये काइनेजियोलॉजी टेपिंग जो होता है, जो पिछले वीडियो में हमने कहा था, इट गिव्स मोबिलिटी विद स्टेबिलिटी. दिस इज फॉर रिजिड टेपिंग. ये एक्यूट लंबर स्पैज्म में हम यूज कर सकते हैं. टू सेव द टाइम आई एम फास्ट फॉरवर्डिंग. सो ये इसका फाइनल पिक्चर बनेगा. तो जिससे ये पूरा कंप्लीट लंबर सपोर्ट दे सकता है. सेम सर्वाइकल के लिए भी इस तरह से हम सर्वाइकल माइलोपैथी में, सर्वाइकल जो ये होते हैं, सर्वाइकल एक्यूट स्पैजम्स होते हैं, उसमें ये टेपिंग यूज कर सकते हैं.
टेपिंग के साथ साथ ये एक नारिकेल बंध है, जिसको हम टेपिंग के जैसा या बंधा के जैसा, क्योंकि टेपिंग को बेसिकली आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से बंधा के जैसा ही देखा जाएगा। ये इस प्रकार से हम बैंडेजिंग कर सकते हैं। नी ऑस्टियो आर्थराइटिस में इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। सॉरी, ये कुछ द्रव्य है, इसको शूलहर द्रव्य है, जिसका लेपन हम कर सकते हैं। उसके बाद में शोथर, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम टेपिंग के साथ साथ बंधक को भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ we can use taping and cupping along with our pain management practice. Yes, we will take questions. If I am audible, सर ये जो टेपिंग करते हैं ये कितने दिन के लिए रखनी होती है लगा के? 4 से 5 दिन तक रह सकती है। सर जैसे समर के सीजन में कई बार फंगल वगैरह का डर रहता है, इससे कुछ के नहीं? नहीं, अगर आप इसकी अच्छी क्वालिटी का टेप यूज कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। दीज आर मेडिकल ग्रेड टेप्स ऑलरेडी। नहीं सर, जैसे सिजेरियन या कोई ऑपरेटिव में कई बार वो लगाते हैं ना बैंडेज, वैसे लगाते हैं बैंडेज के लिए, तो उनसे तो हो मैडम, जाता है ना? टेपिंग एंड बैंडेजिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके सर, ओके। कपिंग और बैंडेज, टेपिंग और बैंडेजिंग ये दोनों अलग चीजें हैं। आपको ओके सर। जो टेपिंग है ये कट स्किन पे या जो स्किन पे इंजरी है, ट्रॉमा है, वहां पे यूज ही नहीं करना है। ओके सर। तो सर कोई स्पेशल उसके ब्रांड की लेनी पड़ती है? काफी ब्रांड की आती है उसके लिए, और काफी क्वालिटीज की भी आती है। 200 रुपए से 2000 रुपए तक का टेप आता है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ओके सर। और सर कपिंग का कैसे रहता है? जैसे ये कप का जो लेना है, इसको ये रीयूजेबल होते हैं कैसे सर? मैडम, उसके अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग कप के। उसीलिए हमने कपिंग और टेपिंग का एक स्पेशल वर्कशॉप रखा है 7 दिन का, जिसमें यस हम सर। डिटेल में हर चीज को इसमें कवर करने जा रहे हैं। ओके सर, ओके। हाँ, कि कौन से टेप है, ग्लास कप है, रीयूजेबल कप कौन से है, यूज एंड थ्रो कप्स कौन से है, सिलिकॉन कप्स कैसे यूज करना है। आप अगर पहले लेक्चर का वीडियो देखोगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। ओके सर। ये ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में कवर करा है सब। सर थोड़ा आइडिया, मतलब किस रेंज में रहते हैं कप? मैंने वही बोला है मैडम कि 200 रुपए से लेके तो 2000 रुपए तक, वो आप पे डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कैसे करते हो ओके और किस सर, लिए आपको कपिंग करना है। ठीक है सर। आपको अगर स्किन के लिए करना है तो सिलिकॉन कप यूज करना पड़ेगा, उसका प्राइस अलग आएगा। आपको ठीक है। केवल जिम के लिए, जिम गोअर के लिए अगर आपको कप यूज करना है तो उसका रीजन और उसका प्राइस और वो उसके क्राइटेरिया अलग होंगे। ठीक है सर, ठीक है। कैन वी थैंक यूज टेपिंग इन हर्निया और डिस्क बल्ज? हाँ, यूज कर सकते हैं, बट टेपिंग इज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट। टेपिंग आपका हर्निया ठीक नहीं करने वाला, टेपिंग आपका डिस्क बल्ज ठीक नहीं करने वाला। इट इज जस्ट अ सपोर्टिव इन एक्यूट कंडीशंस। Sensitive skin, yes, you can use it wisely. It depends on patient to patient. सर हम्म, हेलो। हाँ बोलिए।
Sir, while doing the wet cupping, the blade which you had used, surgical blade, sir, that is of what size? Like what number? 11 number. And sir, the size of incision you had given? It's very thin. Like, is there any size or any like this much centimeter incision is supposed to be No, given? no, no, no. They are. It is not. First of all, you are not intent to give the incision. You are Okay, just sir. scraping it. You are not Okay, sir. Superficial. piercing the blood inside the skin. You are just scraping it. So the Okay, more sir. it is like curcher, or Okay, it is okay, like sir. brushing. एंड सर जब हम कोई भी कपिंग पे पेशेंट को रख रहे हैं कोई भी थेरेपी पे तो वो हमारे Hmm. ये शोथन लेप और इन सब चीजों पे रहेंगे कि हम उन्हें मॉडर्न मेडिसिन एनएसआईडी पेन किलर्स भी देंगे साथ में या उन्हें Madam, ऑफ रखेंगे उससे. first thing is that why you are doing, in which condition you are doing, यस सर. and why you need NSAID, NSAID or other painkillers when you have the Ayurvedic treatment. यस This सर. is for the pain management conditions only. ओके सर. I am practicing cold orthopedic as madam said earlier. I am हम्म. practicing since 8 years. I have the experience of 15 years of practice. But since last 8 years, I am practicing exclusively pain management practice with cold orthopedic cases, and I'm not using a single paracetamol. ओके Though सर. I have practiced exclusively allopathy medicines, exclusively modern medicines for 8 initial years of my practice. I have treated more than 3-5 lakhs patient in general practice. I was a medical officer. I have treated n number of trauma cases, n number of neuro cases, n number of different cases with the allopathy. I am a ओके सर. trained. I am a trained uh, intensivist. I am a trained emergency medical officer. I have worked in major hospitals, major institutes. But after that, since when I have started the Ayurveda practice, I never needed a NCD. ओके सर. And I am the man who can tell you with very confident because I have done both the practices. जी सर. 7 years of allopathy practices and now 9 years of approximately 9 to 10 years of pure Ayurveda practice. Believe me, ओके man, सर. if you will follow your science, you will definitely get the results, good outcomes. Okay, sir. And sir, for as you mentioned in taping, for chronic injury, you Hmm. told to stretch till maximum length. So उसका stretching का कितने length तक लेना है chronic Madam, it injury में? has some criteria which we are Okay, going sir. to, because first of all, you have to understand the mechanism of action of the tips. Okay, sir. What happens to body actually when we apply the tape? Okay, sir. It is a long topic. It is a Okay, sir. detailed topic. So that for that purpose, we have organized a 6 day uh, workshop, which is going to O- be on after 6th of the September. You will get that details in the group might be, and in those 6 days there will be 6 lectures, might be three on taping, three on cupping, and every aspect of cupping and taping we are going to cover in it, because it is very difficult to explain it in very short period like in 15-10 minutes or in 1 hour. Okay, Not sir. until and unless you will not understand the mechanism of cupping or mechanism of taping, then just by telling that stretch twice or stretch minimum or maximum, it has not like minimum or maximum. How much you have to stretch has a specific indication. And sir, after attending all of your sessions, like which will be upcoming now, in which you will be explaining in detail, sir, can we as PG students, like currently I'm doing PG MS first year, sir, from Akola only, Patur. So, Yeah. sir, can I do this on my patient, or I need to have a certification course properly from any No. academy to First perform of these?
No. First, ma'am, be clear. We are just using the new tools. Okay, sir. Cupping is not new thing. Cupping is not the new thing. If you are doing the MS in Shalya, you might be studying the Ghati Yantra, you might be studying the Alabu, you might be uh, studying the Shrungi. Yes, sir. In this is all are the ancient methods of cupping only. Okay, sir. We are just using the modern tools, more Okay, sir. sophisticated tool. Mm-hmm. So it is already in your syllabus. So if anybody Okay, is sir. telling that who have given this authority to you to perform this, so this is just like the improvement or addition in your knowledge. Okay, sir. So you don't need any specific. Already Bandha Chikitsa is there. Already Lepan Chikitsa is there. Already there are different kinds of splinting methods are explained by जी sir. Sushruta. जी sir. So we are just modernizing the Ayurveda. Okay, sir. Now Yeah. just tell Thank you me so much. that if you want to do the Rakta Mokshan of a patient, Yes, sir. according to the Sushruta, according to the old our epics or all our Samhitas, it is a Sira Vedan. So Yes, sir. are you really veding this? Are you really doing the Vedan of the Shira? Are you No, sir. really cutting or you are No, sir. piercing the needle? Only we are piercing the needle, sir, and removing So blood. we have modernized, we have sophisticated the Rakta Mokshana. Do we have changed the principle of Rakta Mokshan? No, sir. Only we So have improvised it. yeah, so we are also improvising, and as we have got now the more knowledge, like we have got the X-rays, we have got the sonographies, we have got the MRIs, so we have got all these other kinds of modalities Okay, to sir. diagnose the patient more precisely. So if we can more precisely diagnose the patient, then we can more precisely treat the patient. That's what the concept behind this. Okay, sir. Thank you, sir, so much. Thank you. Yes. Uh, okay, there are some हेलो queries. हाँ गुड इवनिंग Yes. सर Good evening. Good evening. हाँ सर आपका जो 15 अगस्त को पूना में सेमिनार हुआ था वो मैंने हाँ. अटेंड किया था इट्स वेरी गुड एंड अब लेकिन आपको Thank कम you. टाइम Thank दिया you. गया था आई थिंक 40 मिनट्स वगैरह कुछ तो बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया मैं बाकी पार्टिसिपेंट Thank को भी you. कहना चाहता हूँ अगर सर का कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह मिलता है तो वो जरूर ज्वाइन कीजिए काफ़ी नॉलेज मिलेगा सर लेकिन मुझे एक बात पूछना था जो हम ड्राई कपिंग करते हैं बैक हम्म, के लिए तो उसका टाइम हम्म. ड्यूरेशन कितना मिनट्स और मैक्सिमम कितना मिनट्स रख सकते हैं कोई भी इसके लिए 5 to 7 minutes ओके सर सफिशियंट है। ऐसा उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ऐसा उस पर कोई रिसर्च नहीं है कि इतने मिनट रखना चाहिए या उतने मिनट रखना चाहिए। उसका डिपेंड करता है बिकॉज एवरी बॉडी टाइप इज डिफरेंट। अगर थीन किसी ने तुम्हें पूछा था कि सेंसिटिव और थीन स्किन क्या है, उसके लिए कम टाइम के लिए रखो। अगर कोई बल्कि पेशेंट है विथ थिक स्किन है और बहुत ज्यादा फैटी है तो शायद उसके लिए आप 10 मिनट भी रख लो तो चल जाएगा। तो ये आपको क्लिनिकली जज करना पड़ेगा, यस सर ओके सर थैंक यू बट मोर और लेस 5 to 6 minutes आर मोर देन सफिशिएंट। यस सर थैंक यू एनी अदर क्वेश्चन? स्प्लिंटिंग, चोपड़ा मैडम हमने ऑलरेडी अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर देखा ही है हमारे मास्टर क्लास में भी। वो इट इज अ काइंड ऑफ स्प्लिंटिंग। आजकल स्प्लिंटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि मॉडर्न ऑर्थोटिक्स आ चुके हैं। तो हम ऑर्थोटिक्स अगर ठीक से यूज कर ले तो हमें स्प्लिंटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है आज। वो यानी एंड्रॉइड के जमाने में या आईफोन के जमाने में वो पुराना नोकिया का बटन वाला मोबाइल यूज करना हो जाएगा। सर गुड इवनिंग सर। यस मैम। सर आपका ऑफलाइन है? बस ऑनलाइन तो है अभी 6 दिन का। ऑफलाइन के लिए हम एक एक्चुअली हमने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम बनाया है दैट इज हैविंग द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देन दिस ओके इन कंप्लीट पेन मैनेजमेंट। उसमें हम
अभी CPS का है, उसमें है क्या इंक्लूड ऑफलाइन कुछ ऐसा? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि ऑफलाइन का जो हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर है, हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया है. नाउ वी ऑफर द 6 days ऑफलाइन कोर्स एंड 3 months ऑफ थ्योरी कोर्स. ओके तो उसमें क्या होता है ना कि ये हम 2 टेक्निक को ले रहे हैं. ओके These are only 2 techniques, taping and cupping. These are not complete treatment. मैं पिछले वीडियो में भी मैंने, पिछले हमारे लेक्चर में भी मैंने क्लियर किया था. दिस इज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट. ये आपके ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स में ऐड करेगा. जहां पे आप एक्यूटली कुछ नहीं कर सकते हो, वहां पे टेपिंग और कपिंग से आपको थोड़े देर के लिए या टेम्पररी रिलीफ आप पेशेंट को दे सकते हो. या सपोर्टिव, जैसा आप स्नेहन स्वेदन कर रहे हो, उसके साथ में अगर सपोर्टिव कपिंग कर दे हो तो इट विल इम्प्रूव दी पेशेंट्स आउटकम. लेकिन कंप्लीट पेन मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, उसके बहुत सारे डायग्नोसिस होती है. उसका आपका बेसिक हो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको समझना पड़ेगा पेन का. डॉक्टर हेतल मैम, इंडोर स्टे इज नॉट रिक्वायर्ड इन बोथ द थिंग्स. इट इज ओपीडी प्रोसीजर. सॉरी सर. तो हमने 6 दिन का ऑफलाइन कोर्स, ऑफलाइन ये रहेगा जिसमें मैं 1-to-1 करीब 4 से 5 घंटे हम डिस्कस करेंगे, लेक्चर्स करेंगे. कुछ पेशेंट्स आपको मेरे साथ देखने को मिलेगा. और इसमें सिर्फ टेपिंग कपिंग नहीं, इसके साथ टेपिंग, कपिंग, अग्निकर्म, वेदन कर्म, इसके साथ में मॉडर्न कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, मर्म चिकित्सा और बाकी डायग्नोसिंग टूल्स, ये सारी चीजें भी हम उसमें सिखाते हैं. ओके सो इट इज अ कंप्लीट पेन मैनेजमेंट स्कॉलरशिप या फेलोशिप. ओके तो कब से चालू होने वाला 3 मंथ का ऑनलाइन ऑफलाइन? जल्दी ही बोलेंगे. स्टे कनेक्टेड. डॉक्टर हेडा सर या मंजूषा मैम से कनेक्टेड रहिए. जैसे ही बैच लॉन्च होगी वी विल लेट यू नो. ओके सर. ओके थैंक यू. टेपिंग एंड कपिंग, दिस रिलीव्स द पेन टेम्परली, बट फॉर हाउ लॉन्ग? मैम पेन से डॉक्टर छवि मैम, और टेपिंग जब तक लगा है तब तक ही वो फायदा करेगा. कपिंग माइट बी फॉर 24 to 48 आवर्स. बट फर्स्ट थिंग इज डायग्नोसिस की पेन क्यों है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द पेन. अगर नर्वोटिक ओरिजिन होगा तो टेपिंग और कपिंग बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा. अगर मायोफेशियल ओरिजिन है तो वो हेल्प करेगा. After how many days again cupping can be repeated, sir? And number of required setting. Number of required setting again वो डिपेंड करता है पेशेंट पे और पेशेंट के कंडीशन पे. सेकंड थिंग, आफ्टर हाउ मेनी डेज? roughly after 3 to 4 days you can repeat. Number of sitting you cannot say. I think questions are over. Lalit sir, Manjusha ma'am, so should we conclude? हाँ सर. Okay, thank you everybody. Good night. नहीं, किसी ने तो भी पूछा कि टेप निकालने के बाद कुछ लगा सकते हैं क्या? नहीं, जरूरी नहीं है. लेकिन अगर आप वेट कपिंग कर रहे हो तो उसके बाद में हेमोस्टेटिक आप कुछ यूज कर सकते हैं. जैसे आप लोध्र चूर्ण या फिर मंजिष्ठा चूर्ण उस पर स्प्रेड कर सकते हो. अदरवाइज नो ऑब्वियस नीड. थैंक यू मैम. Those who are interested in course, please
get connected with Dr. Lalit sir or Dr. Manjusha ma'am. Thank you, everyone. I'm posting my WhatsApp number here. Please note it down. And if you want to know about this course also, I'll let you know on your WhatsApp. The fees of this course is 1,500 only for 7 days, where we'll be covering cupping and taping. So in cupping also there are different varieties, and when we see taping, we are also seeing the modern and Ayurveda both perspective. That is Bandha Chikitsa or lep, which we are seeing in our text. Okay, but in clinical practice, which Bandha or which leps should be used, that also we are covering in this workshop. So all the syllabus I'll be posting in the WhatsApp group also, and you just message me personally. I'll post it. So there is Thank one you. question: from where do we get the cups? So cups are You can get easily it from available. anywhere. We Given, will yeah, share will the suppliers number also. supplier number. Dr. Chavi ma'am, if you are in this our old group, then I have already posted the number of the that vendor Okay, from sir. where you will get the discount also. Fine, sir. I'll Yes. check once. Thank Okay. you. Yes. I will repost the number. Okay, sir. We'll conclude the sunset. Okay. Yeah. Thank you. Yes, Yes, I'll Krutika also ma'am. inform about the complete pain Yes. management course. In fact, it is a complete Ayurveda orthopedic course. हाँ लगा सकते हैं, बेटाडिन भी लगा सकते हैं या फिर आप सिंपल ये भी डाल सकते हैं, डस्टिंग पाउडर भी डाल सकते हैं. ओके, थैंक यू, गुड नाइट. Yes, sir.